Namaste, hello, and welcome back to Your Story with Sudha's podcast. This is my 9th episode, guys. और आज के जो हमारे गेस्ट है, सी इज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर स्वाति दास. वो ऑटिस्टिक चाइल्ड को बहुत सारे थेरेपी प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर बेटर फ्यूचर. और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो ऑटिस्टिक चाइल्ड के ऊपर है. तो मैं चाहती हूँ आज जो मतलब पेरेंट्स है, ओके, जो आगे जाके बनना चाहते हैं पेरेंट्स, या फिर जो न्यूली पेरेंट्स है, तो उनको अपने बच्चों को लेके बहुत सारी चीज़ों का मतलब सवाल रहता है. तो आई होप वो ये वीडियो देखे और बहुत सारे चीज़ों के बारे में वो जाने और उनको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाए कैसे अपने बच्चों को सही तरह से पालना है और एक अच्छा पेरेंट्स बनना है. तो लेट्स मीट डॉक्टर स्वाति दास और उनसे बहुत सारी चीज़ें और क्वेश्चन करेंगे. नमस्ते एंड वेलकम टू माय शो डॉक्टर स्वाति दास. Thank you. ଆପଣ କିଛି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? I'm Dr. Swati Dash, occupational therapist. I'm very proud to be an occupational therapist actually because we work in a whole range of माने पूरा ही मଣିଷ बड़ ମାନେ छोट पिलारू आरंभ करिकी बड़ होला पर्यंत whole range of age and stage ଆମେ work करू. occupational therapist माने bachelors in occupational therapy पढ़ी थांती जेदी मु एसवी नेता रोलडपुर कटक रू मोर बैचलर्स सारथिली एंड तापर मो मास्टर्स मो न्यू दिल्ली आईएसआईसी रू सारथिली in neurological conditions. And then I started working with pediatric clients जो मानकर किसी भी neurological delays रोची, neurological issues रोची, जैसे कि autism, ADHD, those are very popular diagnosis nowadays. ताशा डाउन syndrome हैला, cerebral palsy हैला, intellectual disability, learning disability, even some children from syndromic children भी कहउछंती. तो behavioral issues हैला. तो ये सब रेंज रो पिला मानक सहित हमें ऑक्युपेशनल थेरेपी रे तांको लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ तांकर और ताको फैमिली कर हमें बेटर करिया को ट्राई करू. ओके, तो आपण ए फील्ड रे केते वर्ष ला काम करछोंगे? मु स्टार्ट करी छी आफ्टर मो मास्टर्स ऑलमोस्ट 10 to 12 years हे गए. तो अपन को एमती किछि इंस्पायर कला जे माने ए फील्ड चूज करले अपन Definitely, because when I started, it was like कि मु medical में prepare करथली and I got into this because I heard कि एटा भी ଗୋଟେ profession अछि. It was not by chance, it was only chosen by my parents and me ता विषयले बेसी सोनिली. But when I was reading सेतळे मते स्टडी केतल चालथिला सेतळे मु जान नथली जे यार एते स्कोप अछि and what are the things जोडा कि वेस्टर्न कंट्रीज रे बेसी फॉलो होतला. मोर सब सीनियर माने वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ोतले, यूएस हला, यूके हला, कनाडा हला. So there are very less number of occupational therapists who are practicing in India. जेतबेले मोर internship सरला, I got my campus placement. Both type of clinics अच्छी, hospitals अच्छी, समाने हमको campus का नंबर को आसले because we are very less in numbers. एबे तो गुरुडे कॉलेज 60 चिल्ड्रन पढ़ु चलती and तापरे धीरे-धीरे बे प्राइवेट कॉलेजेस भी ओपन हे गलानी, बट अगर प्राइवेट कॉलेजेस भी नथिला. So when I started working, मते adult setup रे काम करिया को भी भल लागिला and मते pediatric setup रे काम करिया को भी भल लागिला. When I came to Odisha, it was little difficult because मते सेतबे job opportunities मिल नथिला because nobody was understanding much about it. And particularly जतले मु बरमपुर आसली सेतबे मते आउरी डिफिकल्ट हैला because एथि बिल्कुल भी अवेयरनेस नथिला. बिल्कुल. तो जेती समस्या टिके फिजियोथेरेपी विषय रे सुनुतले, स्पीच थेरेपी विषय रे सुनुतले, बट व्हाट ऑक्युपेशनल थेरेपी कैन डू इट वाज लिटिल माने पूरा नेग्लिजिबल अमाउंट थिला. एटी किते जण डॉक्टर्स अछंती, बहुत रिनॉन डॉक्टर्स अछंती, से माने मते सपोर्ट करिया स्टार्ट करले because they were aware about it. तो धीरे-धीरे I started and I got very good response in Barampur. जोडे कि बे भाबु नथले जे बरमपुर रे भी लोक माने नो देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल एठी से माने बुझु चंदी से माने पिला पई काम करे को रेडी अछंती. And now in our center like mobile आमे 25 जण थेरेपिस्ट अछु, स्पेशल एजुकेटर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट and आमे एवरी डे बेसिस रे 60 to 70 किड्स देखु छु 1 to 1 रे. and parents माने सकती कि parents माने around पूरा साउथ ओडिशा आसुचंती and समाने से capacity शो करचंदी and this is giving you more and more motivation to read a lot and research in this field. बिल्कुल. तो आपण माने हम व्यूअर को जणाई दियो जे कोन ऑटिस्टिक कोन ऑटिज्म कोन? yes because जेति कि जरा सारा कंडीशंस म आपण को कहिली से सब कंडीशंस भितरु ऑटिज्म गोटे एमती कंडीशन जोडा कि आज का डेट रे बहुत
कहीपर पॉपुलर बट एक्चुअली बहुत सारा पिला एबे भी अच्छे माने डायग्नोसिस होना नहीं. When we were reading, when we were studying at that time, the number of clients were very less, like 1 in 100, those type of. एबे तो मो exactly figure कहया को चाहूनी because every figure is different. UK rate different, US rate different, India rate different, all over the world different. But बहुत सारा autism cases एमती रोहुची जोड़ा को कि facts रे नहीं भी. राइट माने से डायग्नोसिस पाई जाऊ भी नहंती पेरेंट्स आश्चर्य मु पचर आपण को न्यूरोपेडियाट्रिशियन को देखि छंती कि आपण एनआईएम जाई छंती कि निमांस जाई छंती कि एनी इंस्टीट्यूट जोटी कि से डायग्नोसिस करू छंती से को जाई छंती दे सेइंग नो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू गूगल एंड हम एटा देखिलु सब अच्छी ऑटिज्म रा लिए and हमें therapy start करे चाहूँ. So then I asked them, no, go to a doctor, go to a neuropediatrician, go to a psychiatrist, anything. But you just go and just take a proper diagnosis. कारण माने नहीं जो गोटे पिलार जदी ए symptoms जो then से syndrome रे आछी and जदी ए symptom नाही then syndrome रे आसो. So you have to do lot of assessments. बहुत सारे जगह ऑटिज्म लाइक सिम्पटम्स थाए बट दोज आर लाइक मे बी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैला कि किछि जेनेटिक डिसऑर्डर हैला सिंपल ओनली बिहेवियरल इश्यूज भी पिलांकर थाई पारे जोटा कि लागे जे ऑटिस्टिक फीचर्स आजकल एक्वायर्ड ऑटिज्म भी आछी जो माने कि स्क्रीन टाइम जोगु आसुची लाइक दे आर नॉट प्योरली ऑटिस्टिक बट दे आर लाइक ऑटिस्टिक फीचर्स बिकॉज़ समझले बहुत समय टीवी स्क्रीन्स कि मोबाइल स्क्रीन्स रे रोचंती नॉट मच ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस then isolation in life as well. Like they want to be in them. There are a lot of visual stimulation they are getting all the time. Samane काट किसी सुन नहाती कि कहाँ संगे से तांको knowledge की share करे को chance नहीं ना mother को पछेरे को chance अच्छे जे मामा एड़ा हे गला कौन करी भी मु. So they are into only visual stimulations. तो ये जिन सब का autistic like traits आछी. The autism like traits जोड़ा आपण डिटेल रे कहू जे ऑटिस्टिक एग्जैक्टली कोन एग्जैक्टली आउ किए केमिति जानि परिबो. करेक्ट. तो ऑटिज्म रे जदी हमके सिम्पटम्स कहिबी जोड़ा कि DSM-5 क्राइटेरिया जोड़ा हमर सब मेंटल हेल्थ कंडीशंस रो क्राइटेरियाज दिए DSM ऑल ओवर द वर्ल्ड तार क्राइटेरिया अकॉर्डिंगली फर्स्ट होची इफ अ चाइल्ड हैज अ रिपीटेटिव बिहेवियर प्ले बिहेवियर रिपीटेड यूज ऑफ लैंग्वेज एंड रेस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट से गोटे जिनस को बारंबार करथबे रिपीटेटिव मोटर पैटर्न्स करथबे लाइक से जंप करथबे जदी करूथबे से हैंड फ्लैप करथबे जदी करूथबे से लाइन रे लगी टॉयज गुडा रखिया इच्छा करथबे से फास्ट मूविंग टॉयज रे खेलिया को ट्राई करथै पारंती से एमते नै जे गुड पेरेंट्स आसी कोन मैम से लाइन रे लगोनी इज कीपिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज आल्सो अ लाइन लाइक एनी पैटर्न दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू शेप्स सिंबल्स से सब पैटर्न्स जोड़ा कि से डेली देखुचन जेम कि एग्जांपल एबीसीडी बट एबीसीडी जो लिखा हितबो ना एबीसीडी जेड पर्यंत ही लिखा हितबो सो दैट इज अ फिक्स पैटर्न जदी आपण तांको कह देबे जे ना ए पर सी लिखे नो इट्स रॉन्ग देन तांको बिहेवियर पूरा सो दे वांट टू जस्ट लाइक ए पर बी ही लागिबो दे आर वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड अबाउट इट. तो से माने ये सब जिनसे पे बेसी अट्रैक्टेड लाइक इन शेप्स बोर्ड बिकॉज़ ऑल द टाइम से सर्किल से ऐसे नहीं कि बना so they are attracted to that thing. So repetitive behaviors repetitive play behaviors and restricted interest जदी मामा बाहर ऑफिस रो आसिला ऑफिस रो आसला पर सांग से ड्रेस चेंज करबो तो मामा काई ड्रेस चेंज करनी जे पर्यंत मामा को नहीं बिडी की ड्रेस चेंज करी कैसो लाइक दैट जदी मामा मंगलसूत्र एमती पकोची त जदी कोनो चेंज ही गला देन डिफिकल्ट ही जो से जिंस को एक्सेप्ट करिया पे not all the kids are same माने नहीं जे जो सोडा म कहूची सब पिला घर से आथिबो सब डिफरेंट yes जन बहुत सारे पिला कोनी शूज स्टैंड रही रहइबो बाय चांस शू तोड़ पड़े हेबनी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल जदी कड़ेटा एमती आ ऊपर कड़चुलीटा थुआ कथा एमती थुआ जो लाइक ओसीडी टाइप ऑफ सिम्पटम्स बट इत्ते छोटे छुआ पाखरे इत्ते विजुअली समाने स्कैन करूछंती एंड ऑल द टाइम ए जिंसडा ही ताको मुंड रे चलची the brain is constantly processing the visual information what they are getting तो ताको brain आउ को sense को केमिति process करियो because we have 7 more senses तो first होची एटा second होची समानकर sensory issues रहिबो जोडे कि हमें along with these को tag करूछु माने sensory issues माने हमर जो different sensory systems रोची से sensory systems गुडा को right way रे process करि परनी we can go about it later. The second one actually जोटा होची गोटे जो repetitive behavior second one is social communication issues so socially they cannot communicate things
they have some, mostly they have gestalt language processing. ता माने होची ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ वे रे ही देखନ୍ତି, they don't analyze those languages. तो जा फले कोन वे ना ସେମାନେ communicate करिया पई जो टाइम रे जो जिनसटी दरकार सेटा करि परंतनी, that doesn't mean they don't understand. केतरा पिला पारे बहुत भला रिसेप्टिव स्किल्स थाए, रिसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग थाए, बहुत जण पिला आपण पचारिबे से माने आंसर देबे, बट व्हेन दे नीड समथिंग मे बी से माने कहिबेनी, बेले बेले गोटे पिला लेवल अकॉर्डिंगली को पिला रे केते कम्युनिकेशन डेवलप हेची, बट स्टिल जो माने बहुत बेटर वे रे बे मोर पिला माने अच्छा जो माने कि नॉर्मल स्कूल जाउचंती, बहुत सारा नॉर्मल स्कूल बारंपुर से माने जाउचंती, से माने वेल टू डू अछनी, पाठ पढुचंती, बिकॉज़ ऑटिज्म इज नो वे रिलेटेड टू cognitive issues. थाए कोमॉर्बिडिटी थाई पारे, बेले ऑटिज्म संगरे कॉग्निशन रे भी इश्यूज थाए, बट मोस्टली इट इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन, तांगरा एवरेज जो अधिक कॉग्निशन मोस्टली थाए, बट दोस कॉग्निशंस आर डिफिकल्ट फॉर अस काहे ना से कॉग्निशंस गुडा को जज करिया पे हम जने आईक्यू टेस्टिंग वे, लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पिलांगरा आईक्यू टेस्टिंग वे, बट ए पिलांगरा आईक्यू टेस्टिंग वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ दे नो दोस थिंग्स बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दोस थिंग्स. तो जो मैंने माइल्ड कैटेगरी ऑटिज्म भी थिबे ना से मैंने को करथबे जतले स्कूल जाउचंदी, जेतु सा सोशल कम्युनिकेशन डेवलप हिच बट नॉट एज एप्रोप्रिएट, से मैंने पीयर इंटरेक्शन करिया तो डिफिकल्ट होच, माने फ्रेंड्स मानव सहित फ्रेंड्स बनी देबे बट मेंटेन कर परिबेनी, ह्यूमर बुझी परिबेनी, प्रैग्मेटिक्स बुझी परिबेनी, माने जे ओ एटा से मजाक कला, सो दे कैन नॉट मेक फ्रेंड्स दो दे विल बी बुलीड. ओके ओके, सो दोस आर ओवरऑल अ ऑटिज्म symptoms. Yes. And एमिति किछि अछि जोटा कि माने आफ्टर बर्थ किछि जणा पड़िबो पेरेंट्स को जे हां मो चाइल्ड इज समथिंग, एमिति को एज ग्रुप कोन अछि ना? यस यस डेफिनेटली व्हेन वी स्टार्ट विथ इनिशियल इयर्स रे हमें 2 इयर्स पर्यंत जनरली कोनती जे ऑटिज्म सिम्पटम्स जते जणा पड़ेनी. व्हाट व्हाई इज दैट? बिकॉज़ जनरली सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज गुडा कतरे डेवलप ही चले. After 2 years it gets matured and skills रे develop ही चले, kind of 2 years ପରେ generally हम expect करू जे पिलाटी at least 50 to 100 words रे receptive थिबो, तार point कर परथो, pointing थिबो. तो जो social communication में अपन पहिला तार first instance at least point कर परथो, बाबा fan काई फिंगर इंडेक्स फिंगर यूज करी पॉइंट करथो. बहुत जन पेरेंट्स कहते हम इनसे देखि दिए बट वी आर नॉट श्योर एक्चुअली से फैन को देखछ ना नहीं, जॉन हो काई सो फार ऑब्जेक्ट पॉइंटिंग, दादा काई दादा को पॉइंटिंग, तो ए सब जिंस ओडा को पिलंकर जनरली न थाए 22 by the age of 2 years. पेरेंट्स को निमन से कथा कहूनी किंतु एबीसीडी कहूची, बट वी डोंट वांट दैट, वी वांट रियल वर्ड्स, किसे मामा को देखी मामा कहू, पापा को देखी पापा कहू, हम से मामा मामा पापा पापा कहूची, बट से मामा को देखी कि मामा कहूनी. And there is lot of other things जेमति कि हमें देखि कि कहि परिया below 2 years also कि गोटे पिलार रिस्क अछि कि नहीं से ऑटिज्म अंडर जीवो की, जेनी बहुत सारे पिला को आसन 18 months 19 months रे से माने बिल्कुल आई कांटेक्ट दो नथबे. ओके, दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, डाकिले सुनी बेनी किन जब कि छोटे जिंस देखिबो चिप्स टे कि कोन से आसी जिबे. So that is not eye contact or name call response, that is the stimulus जे से देखु जे चिप्स ता मो खाई परिबे सते से आस जाउ छ, या फिर खेलनाटा देखला से आस जाउची, चाबी देखला बापा जाउचंती, तो से विजुअल लर्नर से माने कंडीशनिंग लर्निंग टी तांगर हे जाय जे जने चाबी धरी गला माने बुलिया जाउती मु ता पछ पछ जिबे, बुलिया को जिबार अछि तो मु चप्पलटा पिंदिबी. सो दोस आर कंडीशनिंग लर्निंग, बट आई कांटेक्ट नथिबो, नेम कॉलिंग टू रिस्पोंड नथिबो, रिसेप्टिव स्पीच नथिबो. ओके, से माने सबले निज निज भितरे खेलिया को इच्छा करथबे. बहुत पेरेंट्स कहते नहीं मैं पियर को सता खेले, बट द स्टेजेस ऑफ प्ले और डेवलपमेंट भी देखिया पड़ियो. प्ले डेवलपमेंट इज वेरी क्रुशियल कि गोटे पिला आइसोलेटेड प्ले रे अछि ना पैरेलल प्ले को गलेन. पैरेलल प्ले माने से आउ जण को देखि कि ता साइड रे खेलु छि कि. ओके ओके, एंड स्टेजेस ऑफ प्ले इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट इन माने ऑटिज्म रो सिम्पटम्स को बुझिया पई एंड ऑटिज्म रो ट्रीटमेंट प्रोसेस रे. ओके, तो माने एमिति किछि आपण एडल्ट मानकर ऑटिस्टिक देखि छन? ऑफ कोर्स मु वर्क करे अब फर्स्ट टाइम मु फर्स्ट कॉलेज पढ़ला बेल को भी देखि छी बहुत सारा ऑटिस्टिक जो माने केबे बड़ा हे गेलेनी. मुझे तो फर्स्ट जॉब करथली सब माने 24-25 इयर्स हे गेलेनी, एंड आई हैव रेड लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट ऑटिस्टिक जो माने माइल्ड ऑटिज्म अंडर जाउ छने. दे कैन से दे हाउ दे फील, हाउ दे प्रोसेस दो सेंसरी इंफॉर्मेशन व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट सेंसरी प्रोसेसिंग. कि हमको एग्जांपल बहुत मोर रे कलीग अछि से मतलब बड़ा एग्जांपल
एग्जांपल देथला जे जदी गोटे जिंसडी में आपण देबी आपण 5 किलोस बडे फील होच ओके 5 किलोस इट इज मे बी गोटे ऑटिस्टिक पिला पई एटा 50 किलोस ही पारे फीलिंग दा एंड मे बी त कोटे 5 ग्राम्स बडे भी फील ही पारे राइट धर्म अपन नॉर्मली में कथा होचे मे बी गोटे चाइल्ड को सदा पूरा शाउटिंग परिका सब होतो जरो नॉर्मल ग्राइंडर चलची तो पिला कान बंद कर दियंती गोटे आ गोटे पिला थिबे बाजा बाजुथो बाणा फुटथो बट दे आर एन्जॉयिंग दैट थिंग जो टाइम रे के आमु डर लागतो बट तांको भल लागतो सो दोस एक्सट्रीम सेंसरी प्रोसेसिंग हैपेंस जोटा की बहुत सारा एडल्ट ऑटिस्टिक्स माने कहंती बट बहुत माइल्ड पिला भी मु देखि छी जो माने कि टिके टिके प्रॉब्लम्स तो हुए जेमति कि पीयर इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हला एम्प्लॉयमेंट रे प्रॉब्लम हला बट मु एक्चुअली बहुत सारा पिला को देखि छी जो माने 25 26 27 इयर्स फॉर दे आर लाइक रनिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोस्टली बिकॉज़ हम गवर्नमेंट रे I don't know it maybe but he may पर्यंत मो जानि मारे but they are self employed and they are doing well and एठी भी बरमपुर रे हमें केतरा पिला को वोकेशनली ट्रेन करे ट्राई करछु so that they can assist and help their parents actually okay तो आपण पाको एमिति एडल्ट केस के yes, yes. 18 years 19 years पर्यंत पिला भी आछन मो पाको एबे भी आछन ओके तो माने पेरेंट्स माने जेतोला आपण पाको आछन से मानकर केमि थाउची माने तांको सरप्राइजिंग मोड थाउचंदी ना कोन तांको पई किछि अननोन जिंस लागे कि एमिति बिहेवियर देखिले आजकल तो समस्त गूगल रो पढ़ी कि जानि ही दउचंदी इवन जो माने गान भी आछंदी सबने भी अवेयर थाउचंदी जे इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली जे किछि तो गोटे इशू अछि देन दे आर व्हेन दे आर रीचिंग टू मी मु तांको कोची जे मु तांको टिके एडुकेट करूची जे दीस आर द थिंग्स बेस्ट होंदनी जदि इफ इट इज बिलो 2 years मु तांको बेस्ट होंदनी लेट्स ट्राई फॉर सम initial language facilitation and play facilitation if the child is and जदि particularly screen time अच्छी and nuclear family अच्छी father mother both working parents अछंती then let's work कने बहुत सारे parents in the past अछन जो माने कि हम लागू जे autism परिका symptoms अच्छी but when we are working for 6 months to 1 year we are seeing like it's almost like लागू ही नहीं because repetitive motor patterns नहीं बेसी restricted behavior बेसी किछि नहीं they are more of accepting ସେମାନେ social communication କରୁଛନ୍ତି तो बट इनिशियल फेज रे थोड़े पिला किछि करूनी डेफिनेटली दे आर इनटू ग्रीफ बहुत सारे पेरेंट्स थांती जो माने बहुत ग्रीफ रे चल जानती एंड दे आर लाइक कांस्टेंटली हमें तांको काउंसलिंग करे पड़े आउ के जो पेरेंट्स थांती दे आर लाइक यस आई नीड टू डू फॉर माय चाइल्ड माने लीव नहीं जानती एंड वर्क करे स्टार्ट कर जानती एंड धीरे-धीरे बिकॉज़ थेरेपिस्ट एंड पेरेंट्स नीड टू बी वर्क इन अ टीम थेरेपी सेंटर को आछे हम 45 मिनट्स कर दो रेस्ट से दिन सारा एकुटिया रहबो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क the parents need to understand what is sensory thing and how it is affecting my child then it is much easier the quality of life will be much easier second according to me therapist and parents mostly they should combine and do work parents should be in the therapy session if it is required तो मैम माने एग्जैक्टली कारण कोन ऑटिज्म काहे कि एटा माने हुए नॉर्मल चाइल्ड को जनरली मते पेरेंट्स सन सब ने पचारले जे मैम एटा कोन इनबिल्ट नै मु जति जानथि जे मो पिले ठीक थिला 2 वर्ष पर्यंत बहुत जिंस कहउथिला इवन मते गोटे पेरेंट कहले इंटरेस्टिंगली जब शो देखिबे जे जानि पारे मु ताकरी कथा कहउछि जे मो पिले 2 years पर्यंत कहउतला मते मटन खाइबार अछि बट आफ्टर दैट इट वाज लाइक ऑल वैनिश्ड द केमति एमति हेला बोली तो जनरली मुझे ने कहली कि 2 years परे सिम्पटम्स गुडा को बेसी टिके देखा जेबा स्टार्ट हुए बिकॉज़ देयर इज अ डिफरेंस इन डिमांड्स एंड सप्लाई में भाबु जे 2 years एकला काई मो पिला कहलन so that is why we see more into the things and plus sensory processing धीरे धीरे इत्ते डिमांडिंग ही चले हम बिकॉज़ बहुत सारा जिंस देखुची बाहर को गला जीवा लागला बहुत लोग घर को आसले but actually deep down it is there when the child is in the womb only पेट्रे थिला बेले ही देयर रेगुलेशन इश्यूज आ पछरे बहुत रिसर्चेस अछि आ पछरे कंटीन्यूअस रिसर्चेस चाली छै एक्चुअली एटा कोन वोम भीतर थिला बेले हुए बिकॉज़ एटा किछि डिफरेंट माने एटा किछि डिजीज नुहे जे पेट्रे थिला बेले कोइ गोटे पिला को ऑटिस्टिक हे गला इट इज लाइक कि गोटे पिलार सेंसरी प्रोसेसिंग टी आमो परिका होनी it is something different which can be noticed when the child is in 2 years तापरे टी बेसी जणा पड़े causes of sensory differences काहे की होची मे बी खोजन जे
late motherhood, these are risk factors. It cannot be caused. ଯେମିତି କି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ପଚାରିବେ ଯେ ଡାଇବିଟିଜ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହବାର causes କଣ? There are no causes, there are risk factors. ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ obese ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ଏଗୁଡ଼ା ହବାର chances ବେଶୀ, ମାନେ hypertension and diabetes, but କଣ ସବୁ obese ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ହଉଛି କି? ନାଇଁ ନା. So like that, it is risk factor कि ଯଦି ଗୋଟେ parent ଗୋଟେ late motherhood तार होची, या फिर depression during pregnancy होची, malnutrition, lot of steroids used during pregnancy होची, parents को भितरे बहुत age gap रोची, second child first child भितर जदी बेसी gap रोची, या फिर जदी consensuous marriage होची, तो ये सब गुड़ा का हमें risk factors कहेगा, but we cannot say like these are genetically inherited or like these are the only reasons कि पूरे mother जदी pregnant माने depression वाला तार age no, these are only risk factors. If we are giving जने parents को दी जने screen time जो कुछ गला, no, screen time can trigger the condition into very worse condition, but it cannot cause autism, but definitely it can trigger affect the brain a lot. तो मैम नॉर्मली माने कौन जी एबे ऑटिस्टिक स्टार्ट हे गला, ओके, बट जो माने पेरेंट्स जो किंबा चाइल्ड रो जो इमोशनली जो इम्बैलेंस हुए तो सेटा पे आपण कोन सपोर्ट करंतु? देखो तबे पेरेंट्स तुम फर्स्ट सब बेले हुए जे फर्स्ट यू मेक योरसेल्फ वेरी मच काम. Initial किछि days किछि months, definitely it will be a struggling time because as parents we want our child to be the best. So initially say turbulence रहिबो. Just try to ignore the things कि society कौन कहबो, मो पिला जाय कि फ्यूचर रे कौन हबो. You never know about what we are going to do in our future. Next one day परे हमें कौन करे हमें जानने. आपण पिला को हम देखि छी जो माने कि बिल्कुल कथा कहन तो एंड आफ्टर 1 year आफ्टर 2 year they are very much well spoken, पिला कथा कहउचंदी. So we cannot predict their future ना, तो एबे हमें फ्यूचर को काई भाबो. Just be calm first कि ओके हे गला. बहुत सारे पेरेंट्स निजे को कर्स करन दे रे नहीं ठीक है, इट्स फाइन. आजकल तो इट्स लाइक वेरी कॉमन जिनकी डायबिटीज समथि इट इज. तो फर्स्ट निजे काम हो तो देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड्स इमोशंस. मते पेरेंट्स को जे मैम देखो मो पिलाटी हैंड फ्लैप करूची, मो तक बाहर को नेकी जाउची, से स्टिमिंग करूची, विजुअली स्टिमिंग करूची, माने विजुअली कॉर्नर ऑफ द आईज को देखुची, continuously self talk करूची. Just think why the child is doing. It's something going on which you cannot change. Even if therapy dele pore bhi, it cannot change because it is his mind. अब आपण कहबे जे से झियोटी ते रागी काहेंगी, and it is her inborn thing, जोटा कि आपण चेंज कर परिबेनी. मे बी ता मैनेजिंग को बेटर कर परिबे, कोपिंग स्ट्रेटजी को बेटर कर परिबे. जैसे रागी के जिंस न फोपाडो, रागी की शाउट न करू, बट ता रागीटा को हम बंद कर परिबेनी ना. लाइक दैट यू कैन नॉट रिप्लेस दिस थिंग कि मो पिला स्टिमिंग करू जे काई स्टिमिंग करू करबनी. वी कैन टीच हर कि नहीं कि तू घरे था, घरे करे किबा तते जे किछ स्ट्रेस फील होची, तते किछ भी इमोशनल टर्बुलेंस फील होची, सेते बेले तू निजो को आउ को वेरे करे. जेमति कि बहुत सारे पेरेंट्स फ्लैप करंदी, बहुत सारे पिला खुशी हेले एक्साइटेड हेले फ्लैप करंदी. आई से कि जदि गोटे पेरेंट को ठीक लागुची, यू कैन क्लैप फॉर इट और ये से यू कैन से लाइक दैट टू एक्सप्रेस योर इमोशंस बिकॉज़ शी डजंट नो व्हाट हाउ टू एक्सप्रेस. सेम वे जैसे फ्रस्ट्रेट होची से सेल्फ टॉक करची, यू कैन सेल्फ टॉक इन योर माइंड. तो गोटे पिला को हम सेल्फ टॉकिंग इन द माइंड सिखिया को ट्राई करिया. मेंटल एक्सरसाइजेस टाइप रो जे थिंक अलाउड प्रोटोकॉल टाइप. तो निजे निजे कह यू आर फाइन, यू आर फाइन, यू एब्सोल्युटली फाइन. देन आई एम एंशियस हेले वी crack things no, तो समझे ताको हमें समझे कि replacement behavior सीखे पारिया. And we can also add yoga, meditation and continuous occupational therapy things जो हम अपन exercise करते. It is not a tailor made thing. It is very much according to the child, according to the state of a child. जो तो पाए कि therapy is a long term process and जदि गोटे parent therapy process में participate करिवो से therapy को भी बुझी पारिवो. And जो माने कहउछन जे हमें 2 वर्ष कर देलु एबे हमें घरे करिवो. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. हमें 10 इयर्स पाठ पढ़ी के हमें गोटे थेरेपिस्ट होछु.
ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ଡେଫିନେଟଲି, ବଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମଚ୍ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆର୍ କମିଂ, ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ। ମୁଁ ଏଠି କୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍ କୁ ଇଏ କରିବାକୁ କହୁନି, ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ କି ବହୁତ ସାରା ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଛି। ଆଜିକାଲି CST ହଉ କି ବିହେଭିୟରାଲ ମଡିଫିକେସନ୍स ହଉ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଫୁଡ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଡାଏଟରୀ ପ୍ଲାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, yoga, meditation, sports activities. We have to combine all the approaches. You cannot say कि ମୁଁ special education କରିବି, ମୁଁ speech କରିବିନି, ମୁଁ speech କରିବି, ମୁଁ OT କରିବିନି. No, you have to combine all the approaches. Okay. And also the new approaches which are coming. So therapy centers which are providing new approaches, you have to go there. तो आपण माने स्पेसिफिकली माने पेरेंट्स को सब जिंस टीच करंती. Yes, that is, I feel that is my biggest strength. I give everything to my parents. तो मैम आपणकर माने रिसर्च अनुसार किंबा आपण प्रैक्टिस अनुसार माने गोटे ऑटिज्म चाइल्ड माने निजो फ्यूचर रे सी गोटे नॉर्मल लाइफ बंची परिबो. What is normal according to you? Because I give this answer very subjectively. सी नॉर्मली आमे जेमिति सोशली एक्टिव रहू छु सब जिंस को नै कि हमको माने. Can you just give me 3 things कि जदि ए 3 टाइम से करिवो देन मो भाबी मो चाइल्ड नॉर्मली एक्ट रहू छु. मो नहीं पेरेंट्स को पछारे give me 3 your ambitions or goal set कि ए 3 ता कला परे मो लागबो ओके मो पिल्ला नॉर्मल अछि. नॉर्मली माने सी आमे माने कोन करू सोशली रेस्पॉन्स. ओके, सो रेस्पॉन्सिबिलिटी. हां, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेटा जंती रेस्पॉन्स हमर बिहेवियर रे रहे. सेकेंड जिंस आमे जोडा चाहू जो लाइफ रे सेटा ऊपर आमे फोकस करि परिबो. एबे नॉर्मली मु सपोज करंतु कि पॉडकास्ट बनिया को चाहू छी तो मु सेटा पई मु मेंटली फिजिकली मु से जिंस पई फोकस करि परिबि ना नाही. थर्ड जिंस आउ किछि आमे जदि किछि चाहू छे तो प्रॉपर्ली वी कैन स्पीक कि मते एटा दरकार. सो डायरेक्टली मु कम्युनिकेट करि परिबि ए तीनटा जिंस जेमते नॉर्मली. ओके, सो एक्चुअली जेतले पेरेंट्स आसने मो पाखरे मो पेरेंट्स को एक क्वेश्चन पचारे जे नेक्स्ट 1 ईयर रे व्हाट डू यू वांट टू अचीव विथ योर चाइल्ड इन जनरल. ऑटिज्म को तो छाड़ दियो. इन जनरल मु जति कि लोकन सता कथा हे जे मु जानि छी जे आपण माने बडे बहुत भलो पॉडकास्ट भी मु सुने जते बेले मु एटा जानि छी जे वी शुड फिक्स आवर गोल्स वेरी ऑब्जेक्टिवली. मु रेस्पॉन्स दे पारिबी माने कोन एक्चुअली ता माने हो जे मते कि ओडे किछि क्वेश्चन पचारिबो आई कैन गिव इंफॉर्मेशन टू दैट पर्सन. मु फिजिकली मेंटली एक्टिव रहिबे सो दैट आई कैन डू अ पॉडकास्ट. दैट मीन्स इफ आई एम डूइंग अ जॉब मु गोटे शॉप रे बसची या फिर मु गोटे ऑफिस रे बसची मु सेठी कामली हाफ एन आवर बसी पारिबी एंड जो मते कंप्यूटर वर्क टी दिया आइची या फिर फिजिकल वर्क टी दिया आइची मु सेटा कंप्लीट करबी. Can you give me a time where I can go and stim for myself? I mean, I can do something to relax my body, regulate my body. You also do. We also do, right? Yeah. We are taking breaks. So whenever the child is in a classroom or the job area or the vocational training center, anywhere the child is going, or a family function, माने one child has 5 minutes self regulation skills. माने से निज को 5 मिनिट पन भलो फील कर पारछि, 5 मिनिट पन से क्राउड को बर्दाश्त कर पारछि, 5 मिनिट पर ताको गोटे ब्रेक टी दरकार. जस्ट गिव दैट अ ब्रेक. गोटे पिल्ला जाऊ टिके बुली के आसु तार जहां भी से स्टिमिंग करा चाहू छ करू आसु एंड देन अगेन से 10 मिनिट्स आउ भल रे बस करू. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. Okay. That is possible, but for that it is little difficult for the parents. क्या मो पेरेंट्स को बुझे पारेनी. एबे जो पेरेंट्स माने मो संगे 2014 रे स्टार्ट करथिले मो संगे मो जर्नी जो माने एक पर्यंत भी मो संगे अछि 2024 पर्यंत मो सेमान को से ट्रेनिंग दे पारछे जे मैम सो फंक्शंस मानन करे आपण एमपी जानतो सेमपी जानतो. सो द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स now they are fine. They can go anywhere. They are going to US. They are going to extreme temperatures. They are going to extreme crowded places. All the type of things he or she is able to do the whatever thing. So it is possible, but there are a lot of knowledge and education to gather by the parents, and not just believing the quacks. They have to learn by themselves from an experienced therapist or experienced psychiatrist, whomsoever they are like feeling like this person can educate us very well. Because we are doing and they are doing, it is different. Okay. तो मैम नॉर्मली जस्ट गुड एग्जांपल दो छी
गोटे ऑटिस्टिक चाइल्ड निज पेरेंट्स सहित जदि किसी सोशल एक्टिविटी कि सोशल फंक्शन रे जदि जाउची तो से मोमेंट रे जदि तार किसी हाइपरनेस हला किंबा किसी चिल्ले किसी कहिला से मोमेंट रे पेरेंट्स को आपण केमिति गाइड करंती जे ताको केमिति कंट्रोल करिवे. So here we combine a lot of approach, because see, when a child is not ready to attend a function because the body is not regulated, he is hungry, or those voices are not, she's not finding comfortable with those voices, or there are a lot of new faces. So the new faces are asking like, look at me, say hello to me. So those are very much challenging to a child. So first, if you are thinking like my child is going to show some behavior, initially you work on a lot of occupational therapy activities, sensory integration activities, where their body will feel regulated and the brain will automatically feel regulated. Secondly, you have to train the child with lot of antecedent strategies. Those may be under behavioral modification strategies, where previously से ना बहुत सारा सेमती सिचुएशन फेस करथो. जने मु पेरेंट्स मान को हुए जे आगे आपण घरे गोटे छोटा पार्टीटे रखंतु, सेही लोक मानक संगे जो लोक मानक आगे आपण को किछि एम्ब्रेसमेंट फील हपन, तो यू आर कीपिंग ताको कहि देले आपण आगु ऑल द एंटीसीडेंट स्ट्रेटजी आपण यूज करले जे को जिंस कले मो पिलाटी इरिटेट होछ. बहुत सारा ऑटिस्टिक पिला अछनी जो माने कि जानती फंक्शंस, सो दे आर फाइन. बट जति गोटे लोक बारंबार आसी हेलो बच्चा कौन करूचु गल रात मार दूची, दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. हम पिला भी कंफर्टेबल फील करबनी, सो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट टू सी कंफर्टेबल फील करियो. सो दोज एंटीसीडेंट स्ट्रेटजीज मो आगे मो से जो नियर बाय रिलेटिव्स को बुझे देनी. देन धीरे 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 मो ऐड करी चलीबी. इफ आई एम टचिंग हियर, इट इज फाइन, इट्स फाइन, आई जस्ट टच वंस और ट्वाइस. इट्स समथिंग हम सोसाइटी सेमती हम समस्त चेंज करि पारेनी. सो धीरे धीरे सब सेंसरी सिस्टम्स माने हम टैक्टाइल हैला, हमर जो जो सेंसरी सिस्टम्स अच्छी एक्चुअली हमर ऑल्फैक्टरी हैला, कहा को स्मेल ही पसंद नहीं. एक बार मु नीचे भाबे मु तले कोठी के भी जाए मते जो गुड स्मेल होचे, आई फील गुड, आई फील माय ब्रेन इज मच रेगुलेटेड, आई टेक द सेशंस इन अ मच बेटर वे. मु आसु आसु मो स्टाफ माने समस्त रूम प्रेशर मार दे, तो जानजो मैम रूम प्रेशर मारे, मैम इज इन अ गुड मूड. वी ऑल फील दैट लाइक सकाळ जदी भल्लो खाइची या फिर इवनिंग रे पार्टी अछि मु भल्लो खाइबी, आई फील गुड. तो सेंसरी प्रोसेसिंग जिनसटी जोडा मु बारंबार कहूची, ऑडिटरी हैला, विजन हैला, ऑल्फैक्टरी हैला, गस्टेटरी हैला, टैक्टाइल हैला, आउ दुईटा होची गोटे होची मूवमेंट सेटा हमें वेस्टिबुलर को, आउ होची मसल्स एंड जॉइंट्स सेटा हमें प्रोप्रियोसेप्शन को. ओके, एंड वन मोर इज इंटरोसेप्शन, दैट इज अबाउट योर इंटरनल ऑर्गन्स रा फीलिंग्स. तो ए सब गुडा को पिलांकर सेट करा हुए आगे सेंसरी इंटीग्रेशन ने, देन ओनली दैट child is ready to learn something or to cope with something. तो एमती ही हम धीरे 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 ताको ओके नाउ अपन नेबर्स को नेकी जानतु, धीरे धीरे अपन छोटा पार्टी को नेकी जानतु. एंड मो पेरेंट्स को गोटे बहुत भलो जिंस हुए, एवरी डे अपन एवरी वीक मिनिमम अपन 4 to 5 days पिला को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को नेकी जानतु. जेमनी गोटे दिन आमे मॉल गलु, गोटे दिन आमे टेंपल गलु, गोटे दिन आमे पार्क गलु, गोटे दिन आमे नेबर्स प्लेस को गलु, गोटे दिन आमे नेचर रे किछि नेचर कैंपिंग करया गलु. यू ट्राई दिस एवरी वीक 5 days. तो नॉर्मली मैम जेबे गोटे पेरेंट्स निज चाइल्ड को धरिक आसंती आपण पाखु को, तो आपण केमिति डायग्नोसिस करंती, एनी टेस्ट नॉल कोन आपण रेकमेंड करंती करिता. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सब पेरेंट्स को कहे जे आपण किसी भी पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट पाखु जानतु, किंबा साइकियाट्रिस्ट पाखु जानतु, किंबा साइकोलॉजिस्ट पाखु जानतु. बिकज जिनस कौन ना यहाँ किसी एमआरआई ना, सीटी स्कैन ना जे आम एमआरआईटा करदे कौटी प्रोब्लेम अच्छे आम से जाने जा. दीज आर एक्चुअली बिकज ब्रेन रे पैथोलॉजी किसी ना, ब्रेन जिन आम बहुत सारा ब्रेन कंडीशंस देखो, देयर इज सम पैथोलॉजी इन द एमआरआई, but there is no pathology in the MRI surprisingly, because किसी disease ही नुहे एटा. It is a different type of brain. जेमती कि आम जब functional MRI करेबो, गोटे functional MRI भी हुए. सेते कौन हुए ना, for example आमे I'm not saying in details about functional MRI, but आमे जब किसी function कर दो, आमे पानी के पिउचु, आमे जब गोटे ग्लास टे उठौचु, सेते बड़े आम ब्रेन रे को एरिया गुड़ा का एक्टिवेट होचंते. जेते बड़े आमे कि छोटे भलो फील करूछु, तो को न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होची. तो ए सब जो न्यूरोलॉजिकल रिसर्चेस हेची हुए एफएमआरआई करा गला परे, सेथुर जदि हम ऑटिज्म पिलार एफएमआरआई करबा, हम देखिबा जे तार केतेटा एरिया वेरी वेल डेवलप्ड
कि जो एरिया गुड़ाक स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन पे रेस्पॉन्सिबल से एरिया बेसी डेवलप नहीं बट द लॉजिकल ब्रेन फ्रंटल लोब मे बी से गुड़ाक वेल डेवलप बिकॉज दे हैव वेरी गुड विजुअल मेमोरी बट से लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरिया वीक अच्छी तो एथ्रू मे बी टिके आम जापर जे देर आर सम थिंग्स जोटा फल कि मो पिलार ए एरिया गुड़ाक कहीं डेवलप होनी के जन पेरेंट्स के जन डॉक्टर्स कहते जे जेनेटिक टेस्टिंग करने सो these are the only things which we can do for the test but the diagnostic test is आम किसी गोटे स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करमती बहुत जिन अच्छे कार्स है ईशा है आम स्क्रीनिंग एम चार्ट कलु ईशा इज एन इंडियन स्केल एक्चुअली तो ISAA तो आम एमती के स्केल जो मैंने कि साइकोलॉजिस्ट मैंने कर इंटरप्रिट करुचु एंड आम तार जैसे मो पाक से आसर डिटेल सेंसरी प्रोफाइल करुच्ची तू जानापी कौन तार सेंसरी इश्यूज रोचे मु तार डिटेल स्किल असेसमेंट करुच्ची जे तार को स्किल्स नहीं जोटा से स्पीच आड़ को जापरनी या फिर बिहेवियर प्रॉपर्ली करपारनी तार आम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स टेस्टिंग करुचे कि आम तार ओरल टेस्टिंग कर ओरल स्ट्रक्चर्स टेस्टिंग करुचे तो बहुत प्रकार स्किल वाइज आम टेस्ट कर आपण कौन कौन थेरेपी प्रोवाइड करछन आमे फर्स्ट गोटे पिला तार आसे मो ताको ओनली प्ले थेरेपी आमे सेटा कहू जे वी नीड टू नो इन विच कैटेगरी द पिला अच्छी को प्ले स्टेज रे अच्छी से एनवायरनमेंट को स्कैन करुच्ची कि नहीं एनवायरनमेंट को टॉलरेट करुच्ची कि नहीं पीपल को स्कैन करुच्ची कि नहीं तापरे से धीरे धीरे से मैचिंग जानी पड़छु कि सॉर्टिंग जानी पड़छु दीज आर ऑल प्ले धीरे धीरे आम सेंसरी इंटीग्रेशन एरिया को एक्सप्लोर करूँ जो गोटे पिलाटी आमको एक्सेप्ट करदेला आम टच को एक्सेप्ट करदेला धीरे धीरे आम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स आड़ को जाऊँ जो कि तार फियर नहीं तो इज तार सब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस गुड़ाक इंटीग्रेटेड अच्छी तो ब्रेन काम अच्छी गोटे किसी जिन नापी तो तापर धीरे धीरे आम स्पीच थेरेपी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी जाऊँ तो ऑल टुगेदर आम स्टार्ट करूँ ऑक्युपेशनल थेरेपी रू तापर आम स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी को जाऊँ गोटे पिला 4 years पाखापाखि हो गला आम स्पेशल एजुकेशन जाऊँ बिकज तापर तार एजुकेशन आसे बहुत सारा पेरेंट्स कहते हैं व्हाई एजुकेशन मो पिला को डॉक्टर करार नहीं मत बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फंक्शनल एकेडमिक्स बहुत इंपोर्टेंट गोटे चा केमती बनइब गोटे स्पून सुगर पड़ो 2 स्पून चा पत्ती पड़ो दिस ऑल्सो एकेडमिक्स आप चाहते आप पिलाटी इंडिपेंडेंट हो okay but that for that also you need to know there are 2 pair of shoes I mean 1 pair of shoes has 2 or a dozen of चाहते banana पिला आनो so there is 12 pieces of banana so these are also academics and after a child become 5 year 60-70% of the time गोटे पिलार केमती टाइम स्पेंड हुए स्कूल जाए पाठ पढ़े यदि आप पिलाटी स्कूल जीवनी पाठ पढ़नी जी पढ़ी पार जी से इनवल्व हो पार सी कर कौन ता ब्रेन आउरी स्टिमिंग कर चलो बिकज ता ब्रेन कौन भी स्किल रे एंगेज हेलानी तो से आम पिला कहूँ द बेस्ट टेक्निक बेस्ट थेरेपी फॉर अ चाइल्ड इज गोटे लॉन्ग इंटरवेंशन थेरेपी जो थे कि जब से स्कूल जापर ग्रेट स्कूल जाऊ से किसी समय से स्कूल रे पिला मन सहित रहू मेक श्योर कि मो पिला स्कूल रे आइसोलेटेड बेसी नहीं एंड किसी एक्टिविटीज रे से इन्वॉल्व होची बुलीड होनी एक्सप्लॉइट होनी एंड बहुत स्कूल्स अच्छी बरमपुर जो मैंने सपोर्ट करूँ जिनसटी को मैंने से करूँ पिला लगी बहुत बड़ बड़ भले भले स्कूल अच्छी आदि आप पिलाटी रेडी नहीं या फिर आप पिला शायद मॉडरेट टिके आउ टिके अच्छी एबे देन भी आप प्लान करूँ जमी आमर गोटे एक्सटेंसिव इंटरवेंशन प्लान चलुची आम 1-to-1 थेरेपी दौचु ग्रुप रे थेरेपी दौचु सो दैट से मैंने किसी भले भले जिन शिखु क्रिएटिव वर्क करूँ निज एडियल स्किल शिखु तो वी डू दैट तो पिला जिते एंगेज रही भल तो मैम माने ऑटिस्टिक चाइल्ड पढ़ा किसी डिफिकल्टी हुए कि एक्चुअली कॉग्निशन अगर भल थाए मोस्टली कॉग्निशन भी न थाई पारे बट द वे दे अंडरस्टैंड थिंग्स आर लिटिल बियॉन्ड आमर नॉर्मल टिपिकल एजुकेशन सिस्टम रो से इट इज डिफिकल्ट बट आई हैव बीन सीइंग पिला जो मैंने अपन जस्ट गोटे नॉर्मल गोटे थरे देखिदेवे गोटे पेपर से एक्जाक्टली लिखिदेवे से पेपर कौन लिखाई they are very good painters they are very good माने बहुत भला से एक्चुअली माने मोर मो निज एक्सपीरियंस कोच मैम माने मो जिम जाए ओके सेठी मध्य गोटे आसे मो एक्जाक्टली जाने तार एज केते हबो बट मते लागु छी जे 15 to 20 भितरे डेफिनेटली तार एज थिबो आपण बिलीव करियनी माने 3 months तळे जनकर ना माने मिसी थिला से जनकर नाटा मन रखिछि एबे जस्ट रिसेंटली तांको देखिला तांको ना कर देला
माने बहुत सरप्राइज लागिला हमको माने से जिंस देखि आम एटा को आगुर बहुत यूज होतला टर्मिनोलॉजी एबे आसे टर्मिनोलॉजीज यूज होनी हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म एस्पर्जर्स डिसऑर्डर सैवेंट सिंड्रोम आई मीन दे हैव अ वेरी गुड मेमोरी आमे आजिकली सेटा को यूज करनी से सब वर्ड्स बिकॉज माने एवरी चाइल्ड इज यूनिक से माने भीतर किछि गोटा अच्छे जोटा कि यू हैव टू सी दैट जेंति एबे आमे एवरी ईयर आमे बड़े फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करू इट्स लाइक एनुअल फंक्शन टाइप्स से मो पेरेंट्स को बहुत मोटिवेट करे यू पार्टिसिपेट इन फैंसी ड्रेस कंपटीशन जिते पेरेंट्स मत पचारन जे मैम मो पिलाटी को मु कोन करबी एंड केते पेरेंट्स कोन जे मैम सुभाष बोस करबी मैम मु एटा करबी मैम सेटा करबी मो पेरेंट्स को कि आपण आपण पिल्लार एबिलिटीज को देखंतु देन यू डिसाइड कोन करबे मु केबे भी कोइनी जे सीए करूची मो पिला को स्टार बोली तमे स्टार कर दियो तो मो पेरेंट्स को जेंति काली गोटे एग्जांपल गोटे पिलाटे आसला सेना सब जिंस केंति पिक करे भारी भल लागे शी ऑलवेज पिक एवरीथिंग बिकॉज़ ही हैज अ वेरी हाई क्यूरियोसिटी रिफ्लेक्स तो मुझे ताको माली के कर दो ना दी व्हाई डोंट यू बिकम लाइक गार्डनर शी जस्ट सब वाटरिंग करबो प्लांट्स एंड देन ही पिक ऑल ऑफ देम एंड ही कलेक्टेड तो ता पेरेंट्स बहुत खुशी गेले मु कहली मैम एठो आपण पिलाकर एबिलिटीज देखिया स्टार्ट करंतु इट विल बी वेरी गुड कि जते आपण फ्यूचर से आउट के बड़ ही चलीबो ता स्ट्रेंथ आपण पिक करिवे पण डेफिनेट एबे मु सकाळ गोटे वीडियो टी देखली गोटे बड़ आपण पछले ना बड़ ऑटिस्टिक पिलांगर ही वाज अ 26 इयर्स ओल्ड आज मु व्हाट्सएप स्टेटस इन सेना रखिची दैट चाइल्ड इज अ गोल्फ प्लेयर ऑटिस्टिक पिला इज अ वेरी नेशनल लेवल गोल्फ प्लेयर तो यू सी बिकॉज तार विजुअल स्ट्रेंथ विजुअल मेमोरी टार्गेटिंग बहुत भलो थिबो तार ओरिएंटेशन टोपोग्राफी ओरिएंटेशन बहुत भलो थिबो ही नोज द डायरेक्शन ही नोज हाउ मच ताको गोटे कांस्टेंटली ता कोच ताको कोची फास्ट द फास्टले से फास्ट कर स्लोली से स्लो कर सो एवरी चाइल्ड हैज अ स्किल वी नीड टू जते से बड़ई जीव मो तो धरिया रे जब भाबीबा हे म पिला ऑटिस्टिक गेले किछि हबनी इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ओनली इन ग्रीफ मो से पॉइंट टू आसली हम गोल्फ प्लेयर जो आपण कहले एक्चुअली पेरेंट माने आपण पाख आसुबे तांगे डेफिनेटली पचारथुबे जे मो पिलार फ्यूचर कोन तो आपण से टाइम बे कोन कोनतु कॉन्स्टेंटली वर्किंग पेरेंट्स कहले मो 2 वर्ष थेरेपी देली माओ देबेनी डेफिनेटली फाइनेंशियली बर्डन होथबो डेफिनेटली बिकॉज आमको समस्त ऑर्गेनाइजेशन चले रहे हम एते करछु डेफिनेटली बर्डन होथबो बट मु सेति पई कहली जे भले आपण 45 मिनट्स थेरेपी नियंतु बट यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द थेरेपी सेंटर व्हाट इज हैपनिंग इन द थेरेपी सेशन व्हाई इट इज बीइंग डन व्हाट एल्स वी कैन डू instead of hopping center to center just reach to a person whom with आपण comfortable अछंती and ताको पचरी चलंतु आउ कोन कर पारे हमें आउ कोन करे मो जति पेरेंट्स अछन पुराना पेरेंट्स ना आउ कोन कर पारे एबे मोर गोटे पुराना पेरेंट टी एबे मॉडलिंग स्टार्ट करे जाउची बरमपुर रे बहुत रिसेंटली हमें ताको लॉन्च करछे बहुत सारा पिला छन माने चेस खेलो छंती तो हमें जति पेरेंट्स हिसाब रे कांस्टेंटली वर्क करथबा थेरेपी इज अ डेफिनेटली इंपोर्टेंट टाइप थी जिंस ता छड़ा पेरेंट्स बहुत टाइम दबार अच्छी पछे हाफ एन आवर दियंतु बट इट शुड बी अ क्वालिटी टाइम एंड पिला को एंगेज रख दिन सारा पिला को एंगेज रख जिते एंगेज रखबो तांको ब्रेन सेते बेटर वर्क करबो including some rest definitely and good amount of sleep and hydration and good diet एक्चुअली एटा पचरिया कथा कि नहीं जाननी बट मोर नॉलेज में हम पचरछु गोटे ऑटिस्टिक चाइल्ड किंबा एडल्ट मैरिज जो केते चांसेस थाए समान honestly speaking मु एबे बहुत मु भी बहुत छोट पिलाटी मु एबे केसेस देखबा स्टार्ट करछि सिंस 10-12 इयर्स में जंते कहली इन 2012 मु किछटा केसेस देखी थिली चंडीगढ़ रे मु जॉब करथिली सेठी केतरा बड़ पिला माने थिले जो माने एबे पाखा पाखी 30 इयर्स पाखा पाखी एज वाले तांको भितर जणे मैरिड okay and he doesn't have any baby eparjanta but they are married and गोटे पेरेंट रो गोटे ता पुओ को जति से हैंडल करूची ता बहु को भी सेति हैंडलिंग सिखिया पड़ेबो ताको ता बहु को भी कांस्टेंटली जे हाउ टू डील विथ दैट पर्सन जी के लिटिल बिट टिके टैंट्रम शो करि पारे बट मो पॉइंट हो जे आमे भी तो हम हस्बैंड वाइफ से कंफर्टेबल नु है ना तो मो कोनी जे ऑल द सब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम रे पिला माने मैरिज को जाय परिवे बट डेफिनेटली फ्यू कैन गो तो मैम हाँ मु टिके थोड़ा बहुत रिसर्च करछि तो एटा आपण निजे कोंतु पुओ आ झियो माने जो ऑटिस्टिक थांती सेटा रे कोन डिफरेंस थाए समान को
Honestly speaking, symptom wise there are not much differences, but challenges are different. Generally ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହୁଥିଲା 4:1 ର ରେସିଓ ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ affected ଥାନ୍ତି. Nowadays what I am seeing in my center, if there are 35 boys, then sometimes there are 35 girls also, sometimes there are 60 boys and 10 girls also. तो सेमती कहि परिबिनी मु, but definitely ratios of boy and more. Symptom wise तो सेमती किछि different नथा है, no doubt, but challenges are different definitely when the boy grow up and grows up and the girl grows up. Challenges are different, emotions are little different, and understanding their emotions, एमती भूल कथा एटा जे तांकर इमोशंस नथाय. This is a complete myth. तांकर इमोशंस नथाय. The way of expressing emotions are different, and girls are very clingy, they are very affectionate. Same with autistic girls also, they are very affectionate. Boys are also affectionate. Boys are of more of like they will run around, they will climb more. Girls are little like they like dolls play. So same like typical kids, no different. तो मैम माने खास करी बॉयज मानकर कहीं हाई माने रेंज जो थाए ऑटिस्टिक रेंज टा कहीं हाई. हाँ, सरप्राइजिंगली ऑटिज्म रे आज पर्यंत जितकी भी रिसर्च होची कॉजेस को नेकी हो, रिस्क फैक्टर्स को नेकी हो, किंबा ए बॉय गर्ल डिफरेंस है कि नो, देयर आर नॉट मच लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली. बट टिके बॉयज मानक पई हम पे एथि पे डिफिकल्ट होची बिकॉज़ एज मोस्टली बॉयज माने ब्रेड ओनर्स थांती घरर, तो जितबे गोटे पुओटी ऑटिज्म आसे पेरेंट्स बेसी कंसर्न होती सरप्राइजिंगली, एंड सेमानकर डायग्नोसिस टिके बेसी वे देन गर्ल्स. Maybe that may be a reason, that may not be also a reason. कहीं बहुत जगह लोक भावती जे आईडीटा ऑटिज्म पर्यंत जानते नहीं भी किसी इश्यूज थी एमती भाभी दिखती. मे बी दैट इज द रीजन. बट गोटे बॉयर फ्यूचर ता एम्प्लॉयमेंट आम बेसी इंपोर्टेंट हो जाए, एंड गोटे गर्ल आम भावु जे नहीं से ट्रेन हो जाओ, निजक सेफ रखिपार, निजे कम निजे कर, दैट इज एनफ बोली पेरेंट्स भाभी दिखती. जदि मैम नॉर्मली गोटे पेरेंट्स जानी पारानी मोर चाइल्ड को कौन एक्जाक्टली होती कि से बुझीपारे जे गोटे नॉर्मल चाइल्ड कि टिपिकल चाइल्ड जो आप कहले ऑटिस्टिक चाइल्ड भितर किसी डिफरेंस अच्छी कि, तो तांके प्रॉपर टाइम जो किसी डायग्नोसिस करेलेनी कि कंसल्ट किसी करेलेनी तो किसी प्रॉब्लम्स हो पारे. ऑफकोर्स मुझे कहबी जे थेरेपी कौन कहीं भी दुनिया रे they can cure autism because disease तो क्योर करा जाए ना, बट ब्रेन रो कंडीशन का क्योर केमती करबा. आमे कहबा जे सी पिलाटी आ केबे रागीबनी हे परिबनी, से रागीबो मे बी तार रागीबार वेट डिफरेंट हे पारे. लाइक दैट आमे ऑटिज्म को क्योर किछि करि परिबनी, बट आमे जदि ऑटिज्म पिलाटी को बुझीबा एंड तार सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट ही करिबा, देन डेफिनेटली ता क्वालिटी ऑफ लाइफ जोटा गोटे ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट मेजर रोल, एंड गोटे फैमिली रो क्वालिटी ऑफ लाइफ टी मच बेटर हो जिवो यदि आप गोटे पिला संगे वर्क केबे भी करना. दैट इज फॉर श्योर जे क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी मच बेटर. आप लाइक चलो ठीक अच्छे मो पिला ऑटिस्टिक थिला बट नाउ सीता निजे कम निजे करुची, सी मामार इमोशंस बुझी पारुची, बाहर लोक आसिले मते स्टिमिंग करियर नहीं बुझी पारुची, उटाको सौदा पाई देले से जाई कि सौदा नहीं आछि पैसा गणी की, एंड सी तार मनी मैनेजमेंट केमती करिवो, टाइम मैनेजमेंट केमती करिवो. बिकॉज आफ्टर 6-7 years ओल्ड पिलांकर एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेबे ही स्टार्ट हुए. एग्जीक्यूटिव फंक्शंस माने लाइक कोटा ठीक कोटा भूल जानिबा, जजमेंट स्किल्स एवढा सब 7 years पर ही स्टार्ट हुए. ता बिफोर हम एक्सपेक्ट भी करिया कथा न. तो मैम स्पेसिफिकली आप पेरेंट्स को किसी गाइड करती ना कि फूड चार्ट एमती प्रोवाइड करती जे ऑटिस्टिक चाइल्ड कि निज चाइल्ड को एमती ही प्रोसेस रे आप फूड दियंतु बोली एमती किसी चार्ट प्लान अच्छे. मु जनरली पेरेंट्स को एटा सब सजेस्ट करे जे देखो समस्त सब कथा कहबे एटा दियनी सेटा दियनी बट कौन दब सेटा कई कहबेनी मोस्टली. तो यू हैव टू कंसल्ट टू अ न्यूट्रिशनिस्ट who is working with autism child because diet plays a very important role, very important role. but सेटा गोटे कहीं भी कहि परिबेनी जेमते बे मु कहि परिबेनी जे सी मु जानि छी जे गोटे मेडिसिन दर गोटे मॉलिक्यूल अछि कि DHA अछि एगुडा को ब्रेन डेवलपमेंट पे भलो, सेटा सब पिलांग ब्रेन डेवलपमेंट पे भलो. ऑटिज्म पे को मॉलिक्यूल टी भलो जने बहुत सारा मॉलिक्यूल मु को मॉलिक्यूल के प्रमोट करे चाहनी, बट बहुत सारा मॉलिक्यूल दिया हो जी पिलांग को ए पिला. एंड
डॉक्टर्स माने बहुत भल भल डॉक्टर्स माने दौरान एंड पेरेंट्स मानक मुझे कहबी फॉलो करने बट डीएचसी जमी गोटे मॉलिक्यूल सेमती बहुत सारा जिनस डाइट रे अच्छी जोटा कि गोटे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपोर्टेंट से गोटे न्यूट्रिशनिस्ट ही आपको प्रॉपर्ली सेट करके दे पारिबो बट इन जनरल जति रिसर्चेस ही आछे आज पर्यंत वेरी कंट्रोवर्शियल एंड वेरी गुड आल्सो रिसर्च अच्छे आ ऊपर सेटा होची जनि हमें केजीन दबानी केजीन माने मिल्क प्रोटीन दबानी हमें ग्लूटेन फ्री डाइट दबा जनि हमें आटा मैदा ए सब जिनस आम सुगर दबानी सुगर जमती कि सब प्रकार सुगर पर्टिकुलरली रिफाइंड सुगर चॉकलेट बिस्किट जहाँ भी ओके तो नेचुरल शुगर्स दबा बट आ पछरे बहुत सारा लॉजिक अच्छी एमती नहीं जे एमती रैंडमली कहउछन से माने जे डाइट्स दबनी आ पछरे बहुत लॉजिक अच्छी केते जण पे एटा लागू हुए बट केते जण पे एटा लागू हुए नहीं वी कैन नॉट से कि गोटे पिला ऑटिज्म हैला बस आमे तीनटा जिनस दबानी तार या फिर गोटे पिला खाई पारनी मोर मैम किंतु ताको आमे ई डाइट को स्टॉप करि पारनो नो तम पिला ऊपर कोटा इफेक्ट होची सर यू हैव टू वॉच आउट लिटिल हैला एंड सेकंड जिनस जोटा सब पिला को डाइट इम्पोर्टेंट नॉट ओनली खाली ऑटिज्म पिला वाली सेटा होची डेफिनेटली आमे पैकेटेड फूड्स पे मो मना करे because there are lot of things जोड़े शायद गोटे पिला and just say packet foods खाया लगला ताले normal diet से माने खाओ ना से माने prefer करछे मो packet foods ही खाइबी and parents माने बहुत easy जो मैं ए डब्बाटा दे देबी ए डब्बाटा दे देबी ए डब्बाटा दे देबी ट्राई करो निजे घरे छतुआ बना जोड़ा gluten free छतुआ जोतरे कि gluten नथिबो तो that is good for your child all the cooked food सब cooked food मो पिला पई भलो add little lot vegetables जोटा कि मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्लूटेन फ्री जदि आपण पिला पई विटामिन सी भलो नै गोटे आपण पिला पई जिंक भलो नै गोटे पिला आपण पिला पई सल्फर भलो नै अगेन यू हैव टू डू ऑल द ब्लड एनालिसिस कि को टामो पिला पई भलो न हे पारे एंड यू हैव टू कंसीडर टू योर न्यूट्रिशनिस्ट एंड देन ओनली यू आस्क न्यूट्रिशनिस्ट आपण लिखि देबो एटा खाइबो आ एटा खाइबोनी खाली कहले हबनी फ्रूट्स खाइबो वेजिटेबल्स खाइबो नट्स खाइबो सीड्स खाइबो डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स बहुत भलो तो अगेन सी आई एम नॉट अ राइट पर्सन के कहबा बट दीज आर द जनरली हमें पिला मानको को एक्चुअली मैम आपण जस्ट कहले जो माने ए डिस्क्रिप्शन मते मन पड़ला मोले जस्ट गोटे ब्लॉग रे देखिथिली नॉर्मली माने इंडिया हो किबा आउ को कंट्री रो हो नॉर्मली पिला मानको छोटो चाइल्ड पिला मानको स्कूल रे पचारंतु किबा जोठी मते पचारले मते से माने कोनती हमको चिप्स भल लागे किबा मैगी भल लागे ए टाइप रो कहंती बट गोटे रिसर्च एबे जना पड़ला मैम चाइना रे गोटे पिला को पचारिबे तो कौन भल लगे तो सी ता पाटो कहे जे मते एप्पल भल लगे ब्रोकली भल लगे माने एक्चुअली से माने एजुकेट करंती स्कूल रे मध्ये एजुकेट करंती पिला को जे कौन खाइबा कथा तो से गोटे जिंसडा माने बहुत मिसिंग लागला मते आपण कहलु मते मन यस बिकॉज एक्चुअली कोन ना गोटे माँ जदि हेल्दी फॉलो करूछे ना तन तार पूरा फैमिली हेल्दी फॉलो करिवो जेंति कि फॉर एग्जांपल मो घरे सीड्स नट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स रा मात्रा बहुत अधिक इवन चिकन फिश एग एगुड़ा भी बट मोस्टली मो घर को आई एम सॉरी टू से बट एगुड़ा आसेनी जो जिनस गुड़ा चिप्स एंड पैकेटेड फूड्स जनरली आम घर को आसेनी एटा एड ऑन हैला जते बेले मो पो स्कूल को गला एंड ताका स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट कि नो पैकेट फूड्स नो जंक फूड्स नॉट इवन ऑयली फूड्स एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट व्हिच आई लाइक्ड अबाउट द स्कूल एक्चुअली इट जस्ट स्टार्ट हो धीरे धीरे से एंड मो पो आसी कहबा एटा जंक फूड मु नेबिनी जदि घरे टिके खाइ देबी चलिबो बट मु नेबिनी मैक्सिमम टाइम जल्दी से सेही स्पेंड करछे एंड इज नॉट ईटिंग जंक फूड तो सबले को मामा तो सबले हेल्दी खाइला माने सी हेल्दी खाइली जेटा अलग जिंस I have also been in practice like since 1-2 year actually about पूरा healthy food but आपण जहाँ इच्छा मजे मजे सेटा भी खाई हो तो नहीं जे मु कोची पिला को जम्मा दियोनी बट add on little nutritious food बिल्कुल तो मैम आ गोटे जिंस माने आपण किछि वैक्सीन किबा विटामिन्स या मल्टीविटामिन्स किछि रेकमेंड करंतु those are only a work of a pediatrician तो आमे उडा को किछि भी प्रेस्क्राइब करोना there are a lot of pediatricians who are doing lot of researches on this and I will prefer कि से मन पाखु को जानते जो मैंने autism and ADHD and related disorder ऊपर टिके research करूचंदे and कोटा गोटे पिलार काना खाली मेडिसिन लिखि देले हबनी we have to do the follow up also कि okay मुझे मेडिसिन टा देइथिली and doing there are doctors in Barampur also they are doing this research
एमती नहीं जे से करूना तो येस देयर आर लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन हेल्प इन ब्रेन डेवलपमेंट गोटे गोटे मॉलिक्यूल अच्छी जोटा कि ब्रेन को काम करिवारे हेल्प करूची बट दोज आर नॉट लाइक फॉर लॉन्ग टर्म यूज बिकॉज मेनी हैव साइड इफेक्ट्स एंड डॉक्टर्स मैंने भी कहते हैं एति दिन पर्यंत यूज कर एंड कि इफेक्ट देखा भी एति दिन जाके यूज कर देयर आर मेडिसिन्स व्हिच हेल्पिंग फॉर नॉट मेडिसिन दोज आर आल्सो एक्चुअली हार्मोन्स एंड एंजाइम्स जोटा कि स्लीप को इंड्यूस कर बहुत पिलांकर स्लीप इश्यूज भी था तो सेटा इंड्यूस कर बहुत सारा शुगर फ्री मेडिसिन्स भी मिलूँ व्हिच आई विल रेकमेंड ऑलवेज जदि शुगर फ्री मेडिसिन मिलूँ एंड मु फार्मा कंपनीज मानक एटा रिक्वेस्ट भी करी जो मैंने मो पाक बेले बेले आसनी या फिर मु मिसे मु से कहे दीज मॉलिक्यूल्स है कि पैरासिटामोल है जो नॉर्मल भी आप दौरान पिला टे शुगर फ्री बन पारे आम पे सो लाइक दैट ठीक है तो मैम आगो को माने ऑटिस्टिक रो माने फ्यूचर कौन आगो को आपण कौन भाबुछन जे आरो केमिति फ्यूचर होबो माने ऑटिस्टिक्स माने का फ्यूचर ना इन फ्यूचर वेयर डू यू से ऑटिस्टिक exactly. yes फ्यूचर ऑटिस्टिक माने in future where I'm seeing autism can last 2-3 years helani research in autism has been shifted to another concept जो concept विषय रे समस्त कथा हो नहंती मु आगु शुणी पढ़ी गोटे बुक भी रेकमेंड करी मे भी हमें कमेंट ऐड कर पारे से बुक ये लिंक टी दैट बुक इज कॉल्ड एज ऑटिज्म इज द फ्यूचर और आ गोटे बुक भी अच्छी न्यूरो डाइवर्सिटी इज द फ्यूचर ओके तो ता माने होची जे हमर ह्यूमन इवोल्यूशन हुए राइट द ह्यूमन इवोल्यूशन रे कोन हुए ना जते बेले हमें आउट बिफोर फ्यू इयर्स लाइक 200 इयर्स 300 इयर्स बिफोर हम समस्त जॉ बहुत मोटा थिला बिकॉज हमें कंचा खाଇବା खाउतले नॉट 200 300 एक्चुअली इट इज बीसी तो से टाइम रे लोक मानकर एगुडा सब जॉ थिला धीरे 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 जॉ गुडा को लाइन हे गला राइट एंड हमर टीथ रो साइज कमी गला बिकॉज हमें आउ कंचा खाଇବା खाइले नहीं हमें बॉइल्ड फूड खाइले तो जेमति के बहुत सारे रिसर्चेस रो छी जे ब्रेन रो लेयर्स थिक हबक लागलानी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड एक्सीडेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तो इवोल्यूशन ह्यूमन केबे हुए जेबे देयर इज सम नीड फ्रॉम द थिंग जे जो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो ही ह्यूमन इवोल्यूशन हुए एनवायरमेंटल चेंजेस जो ही ह्यूमन इवोल्यूशन हुए तो ये जो ह्यूमन इवोल्यूशंस गुड़ा कभी हो ची ना शायद आफ्टर 100 years 200 years or I don't know all the newborns will be autistics and their parents will be autistic so जति के आमभलिया प्राणी रही जाइथिबे we will be neurodiverse these are researches coming now in autism and I don't know how much truth in that but I believe this strongly तो एटा रोकिबा पय किछि टिप्स देबे आपण को जिनसटी को रोकिबे we are all going in that path I'll just suggest parents ki work on these things society को fear करंतुनी society की कौन कहबो don't stop working on this child because this child will be a very 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 good child जोड़ा आपण भाभी थिबे आपण पिला पय and society को message देबी जे निजे टिके पढंतु जेमति आज आपण एडुकेट हेले हम वीडियो थ्रू रे आ गोटे 100 लोक एडुकेट हेबे समस्त एडुकेट होंदो आणि जिनसटी को पेरेंट्स का पय एंड से पिलाटी को पय आ गोटे बेटर एनवायरनमेंट हमें करिया को ट्राई कर परिया बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर नाइस बहुत भल लागला मैम आपन सहित मिसिकी और खास करी गोटे डिफरेंट टॉपिक ऊपर बहुत गुड़ा नॉलेज मिलला आई होप बहुत गुड़ा पेरेंट्स को ए पॉडकास्ट थ्रू बहुत किसी नॉलेज मिल आ निज लाइफ रे किसी डिफरेंस आनी पारिबे और खास करी निज पिला मान को भल से बुझी पारिबे और प्रॉपर डायग्नोसिस पई आपण पाक आनी पारिबे कि अदर डॉक्टर पाक नहीं पारिबे तो थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मु पहुंच पाली बहुत पेरेंट्स को पाक बिल्कुल थैंक यू मैम